Hello everyone. This question appears in class 6th NCERT chapter of fraction. This is ninth question of its exercise 7.4. So the question says that Rafiq exercised for 3 by 6 of an hour while Rohit exercised for 3 by 4 of an hour. Who exercised for a longer time? So firstly given हमें Rafiq exercised हमें given है 3 by 6 of an hour. सो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. सो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 60 से 10 टाइम मल्टीप्लाई 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 मिनट. एंड नेक्स्ट रोहित एक्सरसाइज्ड इज इक्वल टू 3 by 4 ऑफ एन आवर. सो सेम से भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 4 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम एंड 15 3 जा 45 minutes. सो रोहित एक्सरसाइज करता है 45 मिनट एंड रफीक एक्सरसाइज करता है 30 मिनट. सो रोहित exercised for a longer time than Rafiq. Thank you.